हेलो फ्रेंड्स। अब हम फिर से अपने दिसंबर के नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लेंगे अपने अफ्रीकन ऑथर्स। पहले अफ्रीकन ऑथर्स को देखेंगे, फिर उनके बाद हम उनके कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे चिनुआ अचेबे। इनका बर्थ हुआ था 1930 में। वॉज अ नाइजीरियन नावलिस्ट। ये एक नाइजीरियन नावलिस्ट थे। पोइट, प्रोफेसर एंड क्रिटिक। हियर इज अ ब्रीफ बायोग्राफी। हम उनकी शॉर्ट में हम उनकी बायोग्राफी को देखेंगे। चिनुआ अचेबे वॉज बोर्न ऑन नवंबर 16 to 1930 इन ओगिडी, Nigeria. He studied English, history and theology at the University of Ibadan. Later worked as a broadcaster for a Nigerian Broadcasting Corporation. He gained international acclaim for his novels depicting African culture and effects of colonialism. His works थिंग्स फॉल अपार्ट। ये वर्क इनका लिखा गया 1958 में। चीबीज डिब्यूट नावल। इट इज कंसिडर्ड ए क्लासिक ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर। इट इज एक्सप्लोर्स द क्लैश बिटवीन इग्बो ट्रेडिशन, किस ट्रेडिशन के लिए? इग्बो ट्रेडिशन एंड ब्रिटिश कोलोनियलिज्म इन नाइजीरिया। ये इसका थीम है। नो लॉन्गर एट ईज, ये लिखा गया 1960 में। This novel follows the life of Obi Onko, the grandson of Okonko from Things Fall Apart, as the struggles with corruption and cultural change in post-colonial Nigeria. Third, Arrow of God, 1964 में लिखा। द नावल एग्जामिन्स द इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म एंड क्रिश्चियनिटी। जो इसका इम्पैक्ट था वो कोलोनियलिज्म और क्रिश्चियनिटी था। ऑन ट्रेडिशनल इग्बो सोसाइटी, ये इग्बो सोसाइटी के ट्रेडिशन पे बेस्ड था। थ्रू द स्टोरी ऑफ एजिलुलू, द हाई प्रीस्ट ऑफ उलू। नेक्स्ट, The Man of the People, 1966, a satirical novel set in post-independence Nigeria. It critiques political corruption and betrayal. नंबर 5 है हमारा Anthems of the Savannah, 1987. Chibi's last completed novel. It portrays the political turmoil in an imaginary West African country and explores themes of power and dictatorship. अचीवमेंट्स, उनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे? नंबर फर्स्ट है फाउंडिंग फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर। उनको अफ्रीकन लिटरेचर का फादर माना जाता है। किसको? चिनुआ चीबी को। चीबी played a significant role in establishing African literature in English as a serious artistic form. Things Fall Apart, इनको ये इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट वर्क था। इज ऑफन साइटेड एज अ सेमिनल वर्क ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर। इसको थिंग फॉल अपार्ट को सेमिनल वर्क ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर कहा जाता है। कल्चरल एम्बेसडर। Through his work, Chibi brought African culture, traditions, and perspectives to a global audience, challenging Western stereotype about Africa. Number 3 है literary awards. Chibi received numerous awards for his contribution to literature, including the main Booker International Prize in 2007 and the Dorothy and Lillian Gish Prize in 2010. Number 4, academic career. Chibi was respected academic, teaching at university in Nigeria and United States. He held various prestigious positions, including the Charles P. Stevenson Junior Professor of Languages and Literature at the Bard College. Next, advocate for African identity. Throughout his life, Chibi advocated
for the recognition and celebration of African identity and culture, both in his writings and in his public speeches and essays. Africans जो ब्लैक्स थे, इस वजह से उनके लिए बहुत ही आंदोलन चलाए गए उनको आगे बढ़ाने के लिए, जिसके बारे में चीबी ने बहुत ही डिटेल में लिखा था। नेक्स्ट हैं चिमेमेंडा Ngozi Adichie is a renowned Nigerian author and feminist. Here is a brief. हम उनकी भी ब्रीफ बायोग्राफी को देखते हैं, बहुत ही डिटेल में हम उनको नहीं पढ़ रहे हैं। चिमेमेंडा Ngozi Adichie was born on September 15, 1977 in Enugu, Nigeria. She grew up, ये एक फीमेल राइटर हैं। She grew up in Nasuka, where she attended primary and secondary schools. Adichie later moved to the United States to study communication and political science at Eastern Connecticut State University. Then pursued a master's degree in creative writing in Johns Hopkins University and master's degree in African Studies in Yale University. वर्क्स, उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। पर्पल हिबिस्कस 2003 एडिची डेब्यूट नावल विच वॉन कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज फॉर बेस्ट फर्स्ट बुक इन 2005. हाफ ऑफ ए येलो सन 2006. This novel won Orange Prize for Fiction in 2007 and was adapted into a film in 2013. The Thing Around Your Neck, the collection of short stories published in 2009. हाफ ऑफ अ येलो सन 2006 में आया और पर्पल हिबिस्कस 2003 में आया। अमेरिकनाह 2013 में आया, ए क्रिटिकली एक्लेम्ड नावल एक्सप्लोरिंग रेस आइडेंटिटी एंड लव विच वोन द नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड फॉर फिक्शन इन 2013. वी शुड ऑल बी Feminist 2014, based on her TEDx talk of the same name. This essay was published as a book and has become a rallying cry for contemporary feminism. Dear Izzy or the Feminist Manifesto in 15 Suggestions 2017 में आया. Another essay addressing feminism written as advice to a friend on how to raise her daughter as a feminist. Number next, Zikora 2020 में आया, a short novel exploring motherhood and identity. motherhood पर ये इनका एक शॉर्ट नावल है। Achievements. Adichie had received numerous awards and honors for her writing, including the MacArthur Fellowship, as known as Genius Grant in 2008. She has been recognized as one of the leading voices in contemporary literature, particularly for her exploration of themes such as gender, race, and identity. Adichie's TED Talk, The Danger of Single Story, has been viewed millions of times and has contributed to important conversation about representation and storytelling. She has been involved in activism, particularly in promoting feminism and advocating for the rights of women and girls in Africa and around the world. इस तरह आज हमने अफ्रीकन लिटरेचर से रिलेटेड 2 राइटर्स के बारे में पढ़ा। इसके आगे अभी हम और भी राइटर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को ऐसे ही देखते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।